Hi guys, good morning. Welcome to Unacademy CA Final. Good morning guys, how you guys are doing? Today is a session on live quiz and we are just left with COVID circular का part 4 जहाँ पर हमारे दो कुछ pending थे वो हम कर लेंगे and then we will go with live quiz. Good morning everyone. As you can see on the screen, all the May 21 and onwards students, October से आपका बैच शुरू हो रहा है. It's a regular batch every day at Unacademy app. So जिन्होंने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किए, Google Store, iOS Store से डाउनलोड कर लीजिए. Batch name is Mission CAC Final. Full course, a regular batch every day, which is matched as per your article shift timing. तो वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. Plus, बहुत सारे sessions already Unacademy ऐप पे आ चुके हैं. जब आप डाउनलोड करोगे, go to my profile, आपको वहाँ पर बहुत सारे सेशंस दिखेंगे जो हमने लाइव लिए थे, वो आप देख सकते हो for your revision. Best part, everything at one place, and सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टीचर्स के, सारे चैप्टर्स, सारे नोट्स, सब एक ही जगह पर. Good morning everyone. In this Domestika course, you will learn how to create a digital portrait with a fantasy twist. Just check, am I audible and visible or no? I'm sorry. वो चला गया अभी वो. Okay. Great. So let's wait for 1 minute. सब लोग ज्वाइन कर ले, उसके बाद we'll start with the session. How are you guys doing? अरे वो ऐड चलता है ना एक्चुअली, तो वो म्यूट करना रह जाता है. Let's start. So as you can see on the screen, जो subscription plans है, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. When you wish to take a plan May 21 and onwards, guys, kindly use the code ABCA. When you use ABCA, you will get 10% discount. तो कोई तो मुझे छेड़ रहा है, 36 days left, 35 days left. बढ़िया है, बढ़िया है. अरे आले रे आले, तुमची बारी आले. कैसा फील हो रहा है बच्चों, कैसा फील होता है when you're so close to the exams again? People are feeling awesome. That's great. बहुत सारे लोगों को धक धक हो रहा है. Started practicing with mask on. बेटा पीपी किट भी पहनना जरूरी है, ग्लव्स भी. डर का माहौल हर जगह फैलते हुए, कोरोना से ज्यादा अब डर लगेगा लोगों को. क्या है कोरोना? कोरोना कुछ नहीं है. फाइनल से का एग्जाम दे के देखो, वो असली डर है. Let's start. So हमारे दो एसेस पेंडिंग थे खाली करने, वो कर लेते हम लोग सर्कुलर के थ्रू, एंड देन वी विल गो विद द लाइव क्विज. दैट्स अमेजिंग गाइस, पीपल आर जॉइनिंग अस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग राकेश, वेलकम टू द क्लास. वैशाली आपको मैं लास्ट में बता दूंगा वो कैसे करना. अभी एक बार अपन इस सर्कुलर शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखो, जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है दैट आई एम टेलिंग, बाकी सब तो टाइम पास है. पहला क्या कहता है? सब्सिक्वेंट इवेंट और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट. आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कैन समवन टेल मी व्हाट इज रिपोर्टिंग डेट?
इतना भी वो 2 सर्कुलर के जो एसेस है वो करे तो उसके बाद कराऊंगा लाइव क्विज. एंड टुमारो इज मेंटी फुल सिलेबस. प्लीज टेल मी व्हाट इज रिपोर्टिंग डेट. 31 मार्च. अब इस साल क्या हो गया, मार्च 20 में वो कोविड आ गया है. ठीक है, सो लोगों की भयंकर तरीके से फटी पड़ी है कि करना तो क्या करें अभी. अब ऐसा कोई हादसा जहां पर कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट बट इट अकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए. सो देखो, आपको पता होगा इंड एस 10 के तहत 2 इवेंट्स अपने एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. Those events that requires adjustment to the accounts recognized in the FS for the reporting period and those do not require adjustments. ठीक है, सो इसको कैटेगराइज कौन करेगा, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग. हमेशा ध्यान रखना, सारा भंगार काम कौन करता है, मैनेजमेंट. हम तो खाली एक ही काम करते हैं, ओपिनियन. सो मैनेजमेंट जजमेंट में बी रिक्वायर्ड टू कैटेगराइज द इवेंट इनटू वन ऑफ दोस अबव कैटेगरीज. सेम इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो ये एडजस्टमेंट्स. अगर एडजस्टमेंट है तो आप सीधा एडजस्ट कर लीजिए सर, उसको पीएल में रिफ्लेक्ट कर दीजिए प्रोविजन के थ्रू. अगर नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज इट बाय वे ऑफ नोट. तो दोनों एएस और इंडेस वैसा ही बोलते हैं. ठीक है, टाइम पास. नाउ कुछ ये रीड कर लेते खाली. एंटिटीज मस्ट डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट्स अनसर्टेनिटीज दैट माइट हैव बीन क्रिएटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 in measuring various assets and liabilities. They should have disclosed how they have dealt with the impact of COVID-19 on the financial position and financial performance of the entity. ऐसी जो सिमिलर लाइन है, देखो ये हर जगह आई है. वो एस्टिमेट्स वाले में भी आई थी, रिस्क वाले में भी आई थी कि ठीक है भैया कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया एफएस पे, आप उसको बता दीजिए आपने कैसे उसको ओवरकम किया है. अभी भी आंसर शुरू नहीं हुआ है. अब कुछ ऐसे से उठकर आ जाता है. कौन सा ऐसे बेटा, वो ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट जिसको अपन बोलते हैं. सो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट. आई थिंक कैमरा इशू. बाबू वन सेक, बाबू प्लीज कम. यार ये अपने आप आ रहा है जा रहा है. बाबू I think now it's visible. Sorry. Now, अब the question arises here is sir events between balance sheet date and date of auditor's report. तो ये सेम चीज ही है. अरे देखो आप ऑडिट जो अपन ने ऐसे 560 में पढ़ रखा है कि अपने को कुछ इवेंट पता चलती है जो कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्टेड है. तो जनरली हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता. इफ यू रिमेंबर ऐसे 560 जनरली हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता. बट हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर्स ऑन द रिपोर्टिंग डेट, तो शायद उसका ओपिनियन वहां पर चेंज हो जाता. तो वो क्या बोलेगा, मैनेजमेंट काइंडली डिस्क्लोज इट. ठीक है, तो दो बात हो जाती है. मैनेजमेंट बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ डिस्क्लोज करने के, तो ही विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स. ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, सो अगर उसके के पास ऑडिट रिपोर्ट है, उसके पास ऑडिट रिपोर्ट है तो क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देगा. अगर ऑडिट रिपोर्ट वो टीसीएलडब्ल्यू को दे चुका है, सो विल रिक्वेस्ट हिम कि सर प्लीज डू नॉट इश्यू टू थर्ड पार्टीज. सालों में चर्बी है, फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी को इश्यू कर दिया, मार्केट में इश्यू कर दिया, तो क्या बोल देता अपन, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस. याद है ऐसा कुछ धुंधला ऐसे 560. तो ये वही चीज है. So the auditor shall perform audit procedures designed to obtain SAI that all events occurring between the date of FS and the date of report that require या तो adjustment या तो disclosure in the FS have been identified. The however is not expected to perform additional audit procedures on matters
which previously applied audit procedure have provided satisfactory conclusion. वापस से करने का जरूरत नहीं है. करेक्ट परीक्षा वो डुअल डेटिंग एंड यूएम पहला जो अपन बोलते थे. Now the auditor shall perform procedures so that they cover the period from the date of FS to the date of report as near as practicable thereto. The auditor shall take into account the following. क्या क्या करना चाहिए. अब ये सेम चीजें ना आपको ऐसे 560 का मिलेगा. तो एज सच okay, Sai Sundar, I will try to explain in English, sorry. So this is the entire part of essay 560. Nothing new is added, just they have added only one line. The auditor should check how the management has dealt with the impact of COVID-19 in the FS. Obtain the understanding of any procedures management has established for the process of subsequent events identification. Number 2, inquire with the management and where appropriate with TCWG. Third, read the minutes of the meetings. Read the entity's latest subsequent interim financial statements. So every point of this is not new. It is exactly same as 560. When as a result of the audit procedure performed as required by para 6 and 7, that is of SA 560, the auditor identifies the events that require adjustments or disclosure. The auditor shall determine whether each such event is appropriately reflected in those FS. So guys, nothing new in SA 560. Only one line you have to remember. Ki boss, if the auditor is following SA 560, he should check the events after balance sheet but before auditor's report date. It is the duty of the management to identify those events, whether which requires adjustments or disclosure or the disclosure. The management should give the details of the impact of COVID-19 on FS. That's it. Nothing else. Rest every part is from the essay. Nothing new is added. Are you guys clear with this? Nothing new is added. Now we'll be moving on to essay 570, the last part of this circular. Okay, now see. So essay 570 basically talks about your GC. So here they have given the entire story. Okay, GC, what is GC exactly? How does GC impacts the FS? What are the obligations of the management and the obligations of the auditor towards GC assumptions and that towards stakeholders? So पहले तो पूरा कहानी का है. Not important. Nothing to be studied, nothing to be studied, nothing to be studied. Nothing to be studied, nothing to be studied. Now guys, I'll ask you a question you have to answer. GC assumption evaluate karna. To evaluate GC assumption is followed or not. It is a primary duty of. It is a primary duty of dash. It is a primary duty of the management. Secondary duties of the auditor. Okay. Now, if generally the period cover should be of 12 months. Should be of 12 months. So whatever the period management has covered, auditor you will also evaluate. You will also evaluate the same period. Now management says कि boss हम लोग का future, हमारा जो business है वो future में चलने वाला है या नहीं है. What is GC assumption? कि boss the management will go along for a foreseeable future. तो हम past नहीं check कर रहे. What are the management checking? They are checking the future. कि बॉस बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग टुडे क्या हमारा बिजनेस चलने वाला है या नहीं चलना, वो इवैल्यूएट कर रहे हैं. सो ऑडिटर यू शुड आल्सो इवैल्यूएट द सेम थिंग. नाउ इफ देयर आर सर्टेन इवेंट्स मैनेजमेंट ने जब इवैल्यूएट किया, जीसी assumption was followed. When the management evaluated, they said yeah, GC assumption is getting followed. But after a week or a 10-day period, auditor went and evaluated. There happened certain event which casted doubt on the GC assumption. Management is saying कि sir GC follow हो रहा है. Auditor is saying कि sir GC follow नहीं हो रहा है. So there's a difference.
So this essay says, auditor, make sure you consider the impact of the same in the audit report. If there is a material uncertainty, you first discuss with the management and the TCWG and discuss with them the plans to overcome this uncertainty. आपको लग रहा है नहीं है, बहुत गड़बड़ है, material uncertainty is there. Do one thing, modify the report. When I say guys modify the report, we say it is basically give an adverse opinion. Clear? So now what does COVID-19 did here? Nothing. वही same लिखते हैं. Everything is same. The auditor's responsibility is to obtain SAI regarding on the and conclude on the appropriateness of the management's use of GC basis in the preparation of FS, and to conclude based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as GC. The responsibility exists even the financial reporting framework used in the preparation of FS does not include an explicit requirement for the management to make a specific assessment of the entity's ability to continue as GC. This entire content is the objective of SA 570 going concern, if you remember a little bit. Nothing new here. Then this is also time pass. Now let's read about COVID. So COVID की वजह से क्या हो सकता है guys? South India and Andhra Pradesh people, little bit of Hindi I'll be using. Because of COVID, there would be certain entities जिनका business is disrupted. There are certain business जो liquidation पे आ चुके हैं. Because you have to close them, because today we are in September. The business, India got locked down in the month of March. 6 months. The expenses were same, correct? Electricity, maintenance, repairs, salary, all payment to creditors, all lease rent, all the expenses though remain same. Income was zero. I'm not saying less. Income was zero for the past 6 months. So there are certain entity जिसके liquidation क्या गए. There are certain entities जहाँ पर वो हो गए, क्या बोलते हैं, working capital got affected. वो restart करना चाहते हैं but working capital नहीं है. Bank is not giving finance now. Whatever WC they had, working capital, it got exhausted because of 6 months के staff salary and everything. So COVID-19 का बहुत ज़्यादा impact होगा. So auditor, when you're auditing 31st March 20 का audit, make sure you consider all the impact. Someone has written hotel and tourism, correct? Hotel, tourism, restaurant, okay? Non-essential items, that everything is impacted. Okay? So let's read. There could be several situations arising from COVID-19 outbreak that could have impact on the assumption related to GC. For some entities, the impact could be severe and may leave the management with no realistic alternative but to liquidate or cease operation, business closed down. There could also be entities which may have to scale down their operation, while impact may not be significant for other entities. It is the responsibility of the management to make the assessment as to whether the entity is a GC. In assessing whether all the GC assumptions is appropriate, management should take into account all the information available about the future, which is at least but not limited to 12 months from the date. So this could be your probable MCQ also. This is a part of essay. Okay, 12 months you have to check. When the FS are authorized for issue, the assessment specific to the entity's circumstances. मतलब होटल है तो होटल वालों के लिए, टूरिज्म है तो टूरिज्म, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट, ठीक है, कोई क्लॉथ मार्केट में कोई किसी का शॉप है तो दैट वे. सो हर एक का स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको जीसी चेक करना होता है. In the current scenario, while making this assessment, management would be expected to prepare detailed forecasts which will require regular updation till the FS are authorized for issue. This forecast should capture the potential scenarios and the management plans. Because हमेशा अपन 570 में सीखते हैं कि boss, if the GC assumption is followed or not followed, what are the management plans to overcome those problems? Now, management should consider the impact of COVID-19 on customers, suppliers, employees. For example, could the entity continue to operate if employees are not able to physically present because everything is work from home? Acha, how the reduced cash flow is impacting its working capital requirements? Management should consider whether the insurance policy is taken by the entity to cover the loss arising from COVID-19. Stock बहुत जगह पर खराब हो गए. If you must have seen a photo or a video is getting circulated in WhatsApp
कि इन मॉल्स में जो लेदर के शॉप्स थे, ठीक है, ऑल दोस आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज शॉप्स ओपन ही नहीं हुए थे. The auditor will be able to form a conclusion related to GC once the management has made its own assessment. हमेशा ध्यान रखना, primary duty is everything is of management, auditor is secondary. The auditor should inquire with the management TCWG about the information which is available about the future and determine whether this has been appropriately considered as a part of management's assessment. Now, for example, it should include a detailed and robust review of forecast, cash flow, sensitivity analysis and the reviews of COVID-19 contingency plan and the impact assessment conducted by the management. देखो, अब now this is a conclusion का part. This is entirely your conclusion. This is same as SA 570, nothing new. If the events or condition have been identified that may cast significant doubt on GC, the auditor shall obtain PSI whether or not it is a material uncertainty exists. Given the level of uncertainty and the speed of increasing impact of COVID-19, this someone has written expire हो गया माल. Correct Tarun. The current position at the point of sign off or a part of subsequent events may need further evidence and the information by the management, including updating the financial model, because सब कुछ impact हो गया हर एक जन का. If the entity is disclosing in the subsequent event disclosure that an estimate of impact cannot be made due to this evolving situation, because वो हर रोज change हो रही है, this may result in material uncertainty and going concern within the audit report. तो material uncertainty की बात आपको लिखनी पड़ेगी. तो अगर सिचुएशन आती है ऐसे 570 के एग्जाम में, तो ध्यान रखना, the auditor should disclose the material uncertainty, the management should disclose the material uncertainty. तो वो जो रिपोर्टिंग का पार्ट है ऐसे 570 का, वो आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो आउट ऑफ सो मेनी एसेज, 570 plays a very crucial role in your audit paper because of GC assumption. अगर मैं बोलता आई एम अ ट्रेडर ऑफ अ पेरिशेबल आइटम, आई एम अ ट्रेडर ऑफ पेरिशेबल आइटम, मैंने मेरे वेयर हाउस में मार्च में स्टॉक कर रखा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूसेस एंड ऑल एवरीथिंग, एंड इट उस टाइम पे वो एसेंशियल गुड्स में नहीं लिया, या फिर मेरे पास स्टाफ नहीं था जो डिलीवरी कर सके, सो पूरा का पूरा माल खराब हो जाएगा. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनकी वैलिडिटी 6 महीना या कुछ ऐसे थी, सब खराब हो जाएगा. सो एवरी बिजनेस इज डिसरप्टेड. सो ऑडिटर काइंडली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द रिपोर्ट. यहाँ पर खाली एक मटेरियल अनसर्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मटेरियल अनसर्टेन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिपोर्ट के अंदर. आर यू गाइस क्लियर विद दिस? So there were doubts of people कि sir we should do COVID-19 circular or no. So I would say, I'm not saying it is that important, but ICI has made and given to us. So guys, you should just have a glance over it कि ठीक है COVID-19 की वजह से क्या क्या आंसर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरे. चेंज नहीं है, there is no change in the essays, some additional requirements they have given, so you should do it. It will take like abhi now when you consolidate all the 4 videos. Every day I have taken 1 hour session, so if you watch it at like 1.2 1.5 अगर देखोगे भी, so I think वो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा आपका. 1.5 or close to 2 hours में it will get over. तो देख लेना चाहिए. इंपॉर्टेंट में ऐसे 570 इज देयर, 570 फिर 315 का वो रिस्क असेसमेंट का आंसर, एस्टिमेट्स का आंसर विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. ऐसे 600 कंसोलिडेशन वाला अनदर ऑडिटर दैट इज बेसिकली, ठीक है. देन ऑडिट ओपिनियन कैसे जाएगी वो. तो देयर आर फ्यू आंसर विच वी फील दैट कि हाँ ठीक है ये लगता है कि ये हो सकता है. बाकी सब तो तुमने भी देखा, इट्स ओनली ज्ञान. अच्छा मैनेजमेंट को कोविड देखना चाहिए, ऑडिटर को भी कोविड देखना चाहिए, बाकी इज ऑल ज्ञान. बट जो स्पेसिफिक आंसर्स आईसीआई ने दे रखे वो उसको आपको कर लेना चाहिए. कूल. सो आरटीपी डन, पास्ट पेपर्स डन, मॉक पेपर्स डन, कोविड सर्कुलर डन. सो whatever material ICI has given, we have completed it. So November 20 you are now charged up. सारी तैयारी हो गई आपकी, तैयारी जीत की. राकेश, यस आपने जो अपनी टीचर की बुक से जो पढ़ रखा है, those things you will study for sure. But जैसे एक आंसर था अपना 600 में कॉन्सो के टाइम पे, what the auditor should do it because material सब्सिडरी को आप नहीं ले सकते, डेटा अवेलेबल नहीं, ऑल दोस थिंग्स. तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सो एक बार वो यहाँ पर से देख लेना चाहिए,
क्योंकि कोविड का तो एसएस में नहीं होगा ना, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. RDB past papers and mock lecture on app. Yes beta, I did not attended circular lectures. No issues, you can watch it at fast speed. ठीक है. Now I request everyone to be ready. I'll be asking random questions. ठीक है, random questions. So you have to write. It is just your evaluation. आपका test in the next 30 minutes. Tomorrow is Menti quiz. Preksha, you just see on Google के how to watch it at fast speed. I think बहुत सारे players आते हैं, उसमें आप फास्ट करके देख सकते हो. आप डाउनलोड नहीं करके देखो तो भी आप 1.5 1. सेटिंग में जाके चेंज करके देख ही सकते हो ना. Raghu, lot of revision lectures have been placed on app also, on YouTube also. App पे अभी प्रोफेशनल एथिक्स चल रहा है एवरी डे. रोज आओ तो आपको दिख जाएगा बेटा, वहां पर कुछ ना कुछ होगा. राइटिंग प्रैक्टिस हाउ, आंसर इन 1 word, पेपर एंड पेन. मेंटी रैंडम क्वेश्चंस फुल सिलेबस. आई हैव नॉट गिवन स्पेसिफिक चैप्टर. एथिक्स भी है, स्टैंडर्ड्स भी है, ऑडिटर्स भी है, कारो भी है, इंश्योरेंस भी है, एनबीएफसी भी है, सीएफएस भी है. रैंडम क्वेश्चंस. 20-21 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिया कल. चलो, सो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, सो आप टाइप कर दीजिएगा रैंडम. ओके, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, बिकॉज यहां पर तो क्या है, नहीं सुधरोगे तुम लोग. आई विल रिक्वेस्ट अलीना मैम एंड गुरु सर टू टेक दो सेशंस. वो अमेंडमेंट्स आपको करवा देंगे. ठीक है, सॉर्टेड नाउ, प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. अभी सुनो रे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कॉपी मत करना. किसी ने अगर लिख दिया ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. आपके मन में जो आंसर है वो लिखो. वो रॉन्ग क्यों है, वो राइट क्यों है, मैं आपको रीजन बताता जाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. People who are on laptop, be quick. People who are on mobile, be quick. I'll ask random questions to you. It is just random. यहां वहां से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अरे अरे अरे, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, और ऊपर चढ़ाओ. चौने के झाड़ पे चढ़ाओ चढ़ाओ. चौने के झाड़ पे चढ़ा के एक दिन ऊपर पहुंचा दोगे तुम लोग मेरे को. थैंक यू, लव यू टू. थैंक यू दोस्तों. लेट्स स्टार्ट. रैंडम क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट गाइस. Someone was from South India. I hope you are comfortable, brother. I forgot your name. You had message ऊपर. No. Anyways, let's start. 3, 2, 1, go. Section for cost audit. Section number for cost audit, guys. Be quick. Random questions. Section number for cost audit. Hi Tanya, how are you? Please answer. Hi Deep, new student. Everyone, I want each one of you to answer. Hi Margish, how are you? Sai Sundar, Sai. Section number 148. Perfect. Section number 148. Good to go. I request, do not copy. आपके मन में जो आया आप चुपचाप लिख दीजिए. ठीक है, भले वो रॉन्ग हो, भले वो राइट हो. ADT 1
ADT1 has to be filed to ROC. ADT1 has to be filed to ROC within dash days. ADT1 has to be filed. ADT1 has to be filed within dash days. रूपाली रिफ्रेश करके देखो, आपका इंटरनेट शायद लेट चल रहा होगा वहां पर. ADT1, come on, ADT1. ADT1 has to be filed within dash days. ADT1 has to be filed within dash days. ये रघु शटअप किसको बोल रहा है? रघु बेटा प्लीज बिहेव, हम हिंसा के सख्त खिलाफ है. रघु गलत बोला बेटा, किसको बोला आपने? Within 15 days, within 15 days, within 15 days. People understand हर जगह पर 30 days है, but यहाँ पर it is 15 days. यहाँ पर it is 15 days. Okay, now there's a confusion. Today there is no Menti. Menti is tomorrow. Menti takes little time to prepare all those questions with options. So tomorrow is a Menti quiz. Today I am asking random questions. I said in the beginning also, जिसने आंसर पहले कहता करने दो, तुम मत देखो, तुम अपना आंसर दो ना, तुम्हारा क्या है वहां पर यार. जो थोड़ा सा लेट चल रहा है जिसका, गाइज काइंडली रिफ्रेश इट. आपका शायद इंटरनेट स्लो होगा इसलिए आपके पास लेट पहुंच रहा होगा. तुम्हारे मन में जो आंसर, तुम वो क्यों देख रहे हो, सामने वाले आंसर क्या है. अंडरस्टैंड द लॉजिक. आई एम टेकिंग योर क्विज, आई एम आस्किंग इंडिविजुअल. बीच में वो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं ऐसा मान के चलो, आएगा आंसर. ठीक है. एंड बेटा पोल यहाँ पर नहीं हो सकता ना, बिकॉज यूट्यूब पे नहीं है वो फैसिलिटी, वो ऐप पे होगा. तो ऐप पे भी जब हम पीई का क्वेश्चंस करते हैं तब हम करते ही है वैसे भी. ठीक है. नेक्स्ट ध्यान से सुना अभी. आई एम आस्किंग प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन. प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन. प्रोफेशनल एथिक्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रैक्टिसिंग सी ने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है किसी को भी, एक्सेप्शंस नहीं है. प्रैक्टिसिंग सी ने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है. जीपीएम, नो जीपीएम, जीपीएम अंडर विच क्लॉज, जस्ट राइट 211 311 411 5711 जो भी है पूरा नीचे मुझे. कम ऑन. प्रैक्टिसिंग सीए ने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है. आई एम टेकिंग इंडिविजुअल क्विज. यू गिव योर आंसर, आई विल सी. आकांक्षा 1011 यू हैव रिटर्न. मेगा जस्ट राइट 122 जो भी आपका आंसर है. पहला क्लॉज, फिर पार्ट, फिर स्केड्यूल. क्लॉज, पार्ट, स्केड्यूल. टाइम बचेगा आपका. आकांक्षा हैज गिवन 1011. दीपा हैज गिवन 111. गाइस इट इज 211. पेस. क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल. Clause 2 part 1 first schedule. Clause 2 part 1 first schedule. Mistake. Due diligence exercise नहीं किया और was grossly negligent. Due diligence exercise नहीं किया और grossly negligent. Due diligence exercise नहीं किया, grossly negligent. Clause number GPM, no GPM. Due diligence exercise नहीं किया, grossly negligent. Clause number, part number, schedule number. Rhea just write numbers. Rinku has written 512.
Raksha, you have written 711. स्नेहा आपने लिखा 722. ऋषभ 612. Guys, it is 712. Gross negligent due diligence 7, part 1, second schedule. Second schedule. So all the people जिनके मैंने नाम लिखे बोले हैं उनका आंसर रॉन्ग है. Rest everyone is right. Just believe that you are having a quiz, your test only with me, and you are the only student. ठीक है? Okay, Sneha, perfect. Next. Let me think. Fails to keep money in a separate bank account. Fails to keep money in a separate bank account. Think and answer. Fails to keep money in a separate bank account. Naman has written 11. दीपा आपका है 1011. It is clause 10, part 1, second schedule. Clause 10, part 1, second schedule. जिनके नाम बोले वो गलत थे बेटा, सुन लीजिएगा बस. मिस्टेक थी. ठीक है. नेक्स्ट. ऑडिटर ने सिक कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, जबकि पुराना वाला जो सीए है उसने बोला कि वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, पैसा नहीं मिला मेरे को. द ओल्ड सीए डिड नॉट गॉट द मनी, बट द न्यू ऑडिटर एक्सेप्टेड द ऑडिट ऑफ सिक कंपनी. जीपीएम, नो जीपीएम, क्लॉज कौन सा आएगा यहां पर? क्लॉज कौन सा आएगा? क्लॉज. द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द ऑडिट ऑफ अ सिक कंपनी, जहां पर पुराने वाले से के पैसे नहीं दिए गए थे. द ओल्ड मनी डिड नॉट रिसीव, द ओल्ड ऑडिटर डिड नॉट रिसीव द रेम्यूनरेशन. जीपीएम, नो जीपीएम, क्लॉज. जीपीएम, नो जीपीएम, क्लॉज. One to two. There is no GPM beta, there is no GPM, but the clause number is 811. No GPM, clause number is 811. 8 communicate. 8 communicate, part 1, first schedule. 811. The reference is given in I think Samir has said, the reference is given there also, but you will write 811. Samir, please take a note of that. ठीक है? Someone is asking what is GPM. But guilty of professional misconduct and not guilty of professional misconduct. How many exceptions are there in 811? One sick unit. एक ही तो है, और क्या है? एक ही है. Next question. The auditor has charged the fees on percentage basis. The auditor has charged the fees on percentage basis to the client, जहाँ पर उन्होंने लोन सैंक्शन करा के दिया था. लोन so उन्होंने लोन सैंक्शन करा के दिया था, and they have charged fees on percentage basis. GPM, no GPM, clause. GPM, no GPM.
राकेश हैव रिटन जीपीएम, नैट्स हैव रिटन जीपीएम. श्रीधर आपका रीजन जीपीएम नो जीपीएम. चैंपियंस अपने एडिशनल चीजें बताते हुए, थैंक यू चैंपियन. करेक्ट, नो जीपीएम 1011. रेगुलेशन 192 का एक्सेप्शन, रेगुलेशन 192 का एक्सेप्शन, नो जीपीएम. परसेंटेज में वहां पर फंड रेजिंग सर्टन, आई अज्यूम कि वो सर्टन फंड रेजिंग में फॉलो हो रहा है. द सेम क्वेश्चन वी हैव डन इट इन व्हेन वी वर डूइंग पीई का क्वेश्चंस आल्सो. करेक्ट राकेश, 8 एक्सेप्शंस है जो. परफेक्ट परफेक्ट. People are giving breakup also 5 plus 3. Thank you champion. Next, let's move on to NBFC guys. NBFC old new both the NBFC. जब हम वहां पर एक फ्रॉड का आंसर करते हैं कि भैया ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है. एक सेकेंड ऋषभ, यू टेक, एक और क्वेश्चन है वहां पर. आप वो सी, अगर पुराना वाला पीएम है आपके पास तो बात अलग है. नए वाले पीएम में जैन 17 एडिशन जो पीएम है उसमें आईसीएस गिवन अ क्लैरिफिकेशन कि यू अज्यूम दैट इट इज अ सर्टेन फंड रेजिंग सर्विसेज, तो उसमें बोल दो नो जीपीएम है. ठीक है, वहां पर ऑडिट. अच्छा करेक्ट ऋषभ, आपको क्लियर हो गया होगा अभी. नाउ स्वाद लिसन, एनबीएफसी फ्रॉड वाला आंसर जहां पर ऑडिटर को मैंने मैनेजमेंट वहां पर डिस्क्लोज करता है कौन कौन से फ्रॉड है वहां पर. वो फॉर्जरी वाला, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, वहां पर एक पॉइंट है कैश शॉर्टेजेस का. कैश शॉर्टेजेस वहां पर 2 अमाउंट है कैश शॉर्टेजेस की. एक जो है अकाउंटेंट बताता है, दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑडिटर या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताता है. सो एनबीएफसी में फ्रॉड के आंसर में व्हेन यू राइटिंग कैश शॉर्टेजेस का पॉइंट देयर इज 2 अमाउंट्स. एक जो अमाउंट है कि भैया केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज फॉर मोर देन डैश, वो अकाउंटेंट को बताना चाहिए था अगर अकाउंटेंट ने पकड़ा है तो. दूसरा, और अकाउंटेंट ने नहीं पकड़ा, मैनेजमेंट या ऑडिटर ने पकड़ा, तो मेरे को वो दोनों अमाउंट चाहिए. सेम वे, पहला पहला अकाउंटेंट वाला बताओ गया, पहला अकाउंटेंट वाला बताओ, दूसरा मैनेजमेंट ऑडिटर वाला बताओ. पहला मुझे अकाउंटेंट वाला चाहिए, पहला अकाउंटेंट वाला, एंड सेकेंड मैनेजमेंट ऑडिटर वाला. Someone has combined it. 15,000 रुपए से 15,000 रुपए, 15,000 तो है ही नहीं बेटा. देखो फेंको मगर प्यार से, फेंको मगर प्यार से. फर्स्ट इज 10,000. अकाउंटेंट के लिए द अमाउंट इज 10,000. ऑडिटर के लिए, ऑडिटर मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कोई है तो इट इज 5,000. इट इज 5,000. First is 10,000 guys and the second part is 5,000. So all this minute question could be probable. Could be probable your MCQs का part. ठीक है, and then descriptive में तो आता ही ये सब चीजें, तो आपको पता होना चाहिए descriptive में आता ही है. ठीक है, so NBFC guys revision is required. 10,000 is accountant, 5,000 is for others. ठीक है, next. आई एम नॉट गोइंग ऑन दोज परसेंटेजेस क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, देन वो कंफ्यूजन हो जाएगा. कहीं पे पता है नेटवर्थ 100 करोड़ का 300 करोड़ का 85% शुड बी दिस 85-90%. सो वो सब अलग है. लेट मी जस्ट थिंक. इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट. व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल, सेक्शन 6 वहां पर अगर किसी को ध्यान होगा तो. ठीक है, लाइफ का धंधा कर रहे हो, हेल्थ का धंधा कर रहे हो, जनरल कर रहे हो एंड री इंश्योरेंस करो. 4 है यहां पर, लाइफ, जनरल, हेल्थ, री. 4 फिगर्स चाहिए मेरे को. व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट? कितना करोड़? लाइफ कॉमा जनरल कॉमा हेल्थ कॉमा री. परीक्षा, यू आर रॉन्ग. परीक्षा, यू आर रॉन्ग बेटा.
रक्षा आपका भी रॉन्ग है, आपने तो दो आंसर दे दिया। नमन रॉन्ग। कम ऑन गाइस, इंश्योरेंस ऑडिट में कैपिटल रिक्वायरमेंट, आई नीड द आंसर। इट इज 100 सब 100, खाली री इंश्योरेंस इज 200, 100 crores 100 crores 100 crores, reinsurement is 200 crores. Besides that, in case of reinsurance, the net owned fund should be 5,000 crores. The net owned fund should be 5,000 crores. The net owned fund should be 5,000 crores. हमेशा ध्यान रखो, सब जगह पर 100 है, री में रिस्क डबल हो जाएगा, री इंश्योरेंस में तो इट इज 200 crores 200 crores. And 5,000 crores is the net owned fund required for reinsurance. So all the people who have got it wrong, please make sure आप उसको ध्यान रखिए. 100 reinsurance risk double, तो 200 crore का capital चाहिए. Net owned fund is 5,000 CR. Okay, देवी कल्याण पांडा, I'm sorry if I pronounce it wrong. बेटा 50-50 टेस्ट है, वो आपका जो इनकम आप कमा रहे हो, टोटल इनकम आपने कमाई है, वो 50% होनी चाहिए फ्रॉम NBFC बिजनेस. आपकी जो टोटल असेट्स है, आपकी जिस भी कैटेगरी की NBFC है, ठीक है, आपकी टोटल असेट्स में से, मतलब फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, कैमरा, लाइट, फैन, एवरीथिंग, यू विल हैव ऑल दोस असेट्स आल्सो, बट NBFC असेट मतलब फाइनेंशियल असेट शुड कॉन्स्टिट्यूट 50%. सो 50% इज टुवर्ड्स द टोटल असेट्स का, 50% शुड बी NBFC का असेट्स, जो भी आपका बिजनेस है. यू आर अर्निंग रेंटल इनकम, यू आर अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, यू आर अर्निंग डिविडेंड इनकम, व्हाटएवर इनकम यू आर अर्निंग, बट टोटल इनकम में से 50% शुड बी फ्रॉम योर बिजनेस ऑफ NBFC. दैट इज कॉल्ड 50-50 टेस्ट. And it is there in SM बेटा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्वेंसी मार्जिन किसी ने बोल ही दिया यार. इंश्योरेंस और में लिमिट, ठीक है. होल्ड ऑन. इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, आई डोंट रिमेंबर. इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे, व्हाट इज द परसेंटेज? फॉरगेट दोस क्लॉजेस कि वो RBI वाले फंड में जाना चाहिए, CG सिक्योरिटीज में जाना चाहिए. मेरे को परसेंटेज 3% है वहां पर. 3% है इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में, 3% है लाइफ इंश्योरेंस के प्रति. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बैलेंस अप्रूव्ड कहीं पे है. 3% है. आई नीड दोस परसेंटेजेस. स्वाति नो ज्ञान, कम ऑन आंसर. हाय कुणाल बेटा, लेट है तू आज. कम ऑन आंसर गाइस, आंसर. Insurance audit में when you're talking about investments in the case of LIC business, they have to maintain certain percentages. What are those percentages? पहला GSEC में जाता है, फिर GSEC के अंदर अप्रूव सिक्योरिटीज में जाता है, फिर तीसरा बैलेंस में जाता है. So what are those percentages? I just need those percentages, Rupali. Come on guys, come on. It's your test. There are people who have given wrong answer. I miss the names. Rinku, your answer is wrong. Sneha, your answer is wrong. It is basically 25 balance. 25 in GSEC, that's government securities. Next 25 in GSEC and other approved securities. And then balance in approved investments. So it is 25 in balance. And when you talk about general it is 25-10 balance. 25-10 balance. Correct, Rakesh. 25-25 balance, 25-10 balance. So guys, this is your descriptive answer, your MCQ answer. Correct. General में it is 25-10 balance. Okay, next answer. LODR guys, LODR. ठीक है, LODR. In case of
Section 177, okay? Understand my question ना. In case of Section 177 Audit Committee में minimum कितने directors and independent कितने directors Audit Committee में बैठेंगे और independent कितने बैठेंगे? 177 Audit Committee में. 177 Audit Committee में. Priya being very quick. 177 Audit Committee. Akansha wrong. Vaishali wrong. Megha wrong. Deepika, you are also wrong. Naman also wrong. Jhansi wrong. Okay, ठीक है, Jhansi you have written that way, it's correct. Akshay wrong. Nihali wrong. Sameer wrong. Vishal wrong. It is minimum 3 directors, and out of which majority should be independent. Minimum 3 directors, and out of which majority should be independent. Minimum 3 directors, out of which majority should be independent. So guys, that's a trick to make you confused. First I said, okay, I am taking you to LODR. So every brain started working in regards to LODR. But then I asked the question on 177. That's the level of ICI questions. पूछेंगे कुछ और, कहानी कुछ और होएगी ऊपर. Last 1/4 में they will ask what is specific. It is minimum 3 directors and out of which majority should be independent. हाँ, but if अगर आपको LODR applicable है, then minimum 3 and 2/3 should be independent. 2/3 should be independent. 2/3 should be independent. ठीक है? So guys, please make a note of this. जिनके wrong गए हैं. 2/3 should be independent in LODR. 177 में it is majority. It is majority. ठीक है? Okay. Now, next question. Okay. Okay, we are on CARO. ठीक है? XYZ P Limited. B Quick, paid up share capital 85 lakhs. Loans 95 lakhs. Turnover नहीं, revenue 10 crore. CARO applicable, not applicable. CARO applicable, not applicable. XYZ private limited, paid up capital 85 lakhs, loan 95 lakhs, revenue 10 crores. CARO applicable, not applicable. Rinku says CARO applicable without limit. बहुत ही उमदा खेलते हुए लोग. कम ऑन, CARO applicable, not applicable. Jhansi says applicable, Deepa says applicable, Akshay says applicable, Satish, you're saying applicable. Akansha says XYZ P Limited. P Limited means private company. Rishabh says revenue applicable only 1 crore. Any condition chukri, CARO tikdi. Vishal says not applicable now. Yes, no, it's a private company. XYZ P Limited means it's a private company. अब बच्चों के पैरों नीचे से जमीन हिल जाएगी. बेटा बड़ा ध्यान सुनो तुम. Private limited company में the paid up share capital reserve should be less than or equal to 1 crore. That is maximum. It is less than or equal to 1 crore. Loan less than or equal to 1 crore. That is maximum. Revenue less than or equal to 10 crore. That is maximum. मैंने क्या बोला? 10 करोड़ है. तो कैपिटल कम है, लोन कम है,
रेवेन्यू भी कम है बिकॉज द वर्ड्स आर मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, उतने तक चलेगा, उसके ऊपर चला गया, इफ यू क्रॉस दैट लिमिट देन कारो इज एप्लीकेबल. माय आंसर इज कारो is not applicable. कारो is not applicable, not applicable, not applicable. अभी भी बहुत सारे बच्चे लड़ रहे, रिद्धि बेटा रिद्धि नॉट एप्लीकेबल ना. Read the question, understand the question, then answer. कैसा लगा? Welcome to CF Final Singam. Every word is important. Every word is important. 1 करोड़ 10 करोड़, 1 CR 10 CR, वहां तक रहेगा तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल. उसके ऊपर जाता है तो कारो एप्लीकेबल होता है. ठीक है. अरे 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 अभी तो मजा आएगा अभी. रुको रुको रुको, होल्ड ऑन. ठीक है. अब देखो तुमको अलग अलग जगह से लेके जाऊंगा मैं अभी. लेट्स मूव ऑन टू नाउ ऑडिटर्स, कंपनी ऑडिटर्स. ठीक है. कंपनी ऑडिटर्स में व्हेन वी वर डूइंग कॉस्ट ऑडिट में हम कर रहे थे वहां पर कॉस्ट ऑडिट की एग्जाम्पशन. सो व्हेन यू डू कॉस्ट ऑडिट की एग्जाम्पशन, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. ठीक है. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स याद है ऐसा कुछ है. तो वहां पर एक पॉइंट है यूनिट इन एसईजेड. तो अब कुछ एग्जाम्पशंस है. मेरे को बताओ यूनिट इन एसईजेड के लिए कितना परसेंटेज चेक करना है. अगर मेरी यूनिट एसईजेड में व्हाट इज द परसेंटेज एसईजेड की जो एक्सपोर्ट्स है उनके लिए एग्जाम्पशन पाने के लिए कुछ परसेंटेज है वहां पर. क्या परसेंटेज है वो? कम ऑन गाइस, यू हैव टू आंसर. राकेश 75%, आकांक्षा 75%, कुणाल 75%, रक्षा 75%, 75%. कम ऑन गाइस, कितना परसेंटेज वहां पर? नमन 75%, वैभव 75%. अब सबका पैरट होगा वहां पर, तोता तुम्हारा बेटा. एसईजेड में यूनिट है तो उसका काम तो एक्सपोर्ट ही करना है ना. तो अगर वो यूनिट इन एसईजेड इट इज ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड. वो जो 75% वाला करना है वो करना है नॉन एसईजेड यूनिट्स के लिए. अगर मेरी अंधेरी में दुकान है, बैंड्रा में आई हैव अ शॉप एंड आई एम एक्सपोर्टिंग एंड माय रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, देन आई विल गेट द एग्जाम्पशन. बट इफ आई हैव अंधेरी सीप्स, एसईजेड जो हमारा जो जोन है, अगर वहां मेरा अगर ऑफिस है, मेरी दुकान है, तो मेरे को तो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड. सेज में देयर इज नो परसेंटेज. कैसा लगा? खेलो और खेलो, मजा आएगा तुमको, मजा आएगा. अभी भी लोग लिख रहे हैं मोर देन 75. गाइस वेरी माइन्यूट पार्ट, वेरी माइन्यूट पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट अब ध्यान से सुनो. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी क्विक. ओके, वी मूव ऑन टू रोटेशन में. ठीक है. रोटेशन के लिए मेरे को पब्लिक कंपनी का एप्लीकेबिलिटी का लिमिट चाहिए. रोटेशन की एप्लीकेबिलिटी में जो पब्लिक कंपनी का लिमिट चाहिए. रोटेशन में पब्लिक कंपनी का लिमिट चाहिए. सोचो. रोटेशन में पब्लिक कंपनी को कैसे एप्लीकेबल होता है? मुझे लिमिट चाहिए, जस्ट लिमिट. रिद्धि अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन बेटा. मैं पूछ रहा हूं पब्लिक कंपनी की मेरे को लिमिट चाहिए. टर्नओवर 100 करोड़, डिपॉजिट 50 करोड़ एंड कैपिटल 10 करोड़. क्या फेंका है स्नेहा ने? बहुत ही उम्दा फेंक रहे हो आप. भगवान आत्मा को शांति दे. रिंकू वर्मा पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और बोरिंग 50 करोड़. करिश्मा 10 करोड़ टर्नओवर, बोरिंग फ्रॉम बैंक 550 करोड़. सबके ऑडिट के ना लॉ लगे हुए हैं.
रोटेशन इज एप्लीकेबल टू 4. ठीक है, लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, अदर्स. लिस्टेड में यू डोंट चेक एनी लिमिट, यूं ही एप्लीकेबल. पब्लिक में यू चेक पेड अप शेयर कैपिटल, प्राइवेट में यू चेक पेड अप शेयर कैपिटल. अदर्स में क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस, द अबव टू कैटेगरीज पेड अप शेयर कैपिटल लेस, बट द लोन्स, स्नेहा आपने डिपॉजिट लिखा था, यहाँ पर लोन होना चाहिए वो. ठीक है, फिगर्स देखो 10, 50, 50. It is 0, 10, 50, 50, 0, 10, 50, 50, 0, 10, 50, 50, 0, 10, 50, 50. So public में मैंने ask कि public में मेरे को लिमिट चाहिए, तो that is paid up share capital should be minimum 10 CR या फिर loan should be minimum 50 CR. बहुत सारे बच्चों का लिमिट गलत है भाई, कहीं कोई बोलता है लोन, कहीं बोलता है टर्नओवर, कहीं बोलता है डिपॉजिट्स. प्लीज चेक योर फैक्ट्स बिफोर फेकिंग. It's 0, 10, 50, 50. ठीक है, just remember this. Done? अब done सुनना. Last question because time's up already, क्योंकि ऐप पे जाना है फिर. Last question guys, last question. 110% आपका आंसर रॉन्ग होगा. Easy, easy I'll ask. एक कंपनी है AB लिमिटेड. ठीक है, AB लिमिटेड, जिसका नेटवर्थ 2 करोड़ है, टर्नओवर 8 करोड़ है. उनको अपना FS ईमेल से भेजना है, अलाउड और नॉट अलाउड. AB लिमिटेड नेटवर्थ 2 करोड़, टर्नओवर 8 करोड़. They have to send their FS through email, allowed, not allowed. Allowed, not allowed. Just write allowed, not allowed. I'll give the reason. क्या है? Whatever your heart says. नहीं बेटा लिस्टेड नहीं है, कुछ स्पेसिफाई नहीं है, वो लोगों ने दिया है मतलब फिर वो लिस्टेड नहीं है. अगर लिस्टेड होती तो बोलते वो लोग, फिर लिस्टेड नहीं है तो हम बोलेंगे अनलिस्टेड पब्लिक. लिस्टेड नहीं है बेटा, लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है. इट इज नॉट लिस्टेड भाई. So majority crowd has given, sir, it is allowed. Jingalala ho ho, jingalala ho ho. Allowed. Akansha carry not allowed. Deepika saying not allowed. Rupali saying not allowed, not allowed. Sneha okay not allowed. कैसा तुम लोग कैसे हृदय परिवर्तन कैसा होता है रे? I don't understand how do you get हृदय परिवर्तन so quickly. कभी कहते हो allowed, कभी कहते हो not allowed. It is not allowed. It is not allowed, 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 not allowed. अगर किसी को याद होगा वहां पर बोला गया है कि ईमेल भेजने, ईमेल के थ्रू FS भेजने की जो बात है, इट्स गिवन टू, बेनिफिट इज गिवन टू लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी. अदर पब्लिक कंपनी में देयर आर 2 things to be checked. There are 2 things to be checked. Net worth should be more than 1 crore and turnover should be more than 10 crores. Net worth should be more than 1 crore and turnover should be more than 10 crores. Net worth more than 1 crore तो हुआ, and turnover more than 10 crores नहीं हुआ. तो सर आप ईमेल से नहीं भेज सकते. And when we were doing section 136 मैंने ये सेम क्वेश्चन कराया बिकॉज ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ऑलरेडी. 6 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है ये बेटा. दिस इज इन 136 सर्कुलेशन ऑफ FS. लगे फाटे और जाओ और करो इंस्टाग्राम, करो और इंस्टाग्राम करो.
एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, देन यू ब्लेम के सर ने नहीं पढ़ा है ना, हम तो पूरा लिखा था ना। अबे भाई क्वेश्चन तो देख लो पहले क्या है, पीछे तो देखो पहले क्या है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस गाइस? अपने को क्या, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे ना, रूबी आई है, रूबी अपने को सब आ गया अपना, तो अभी आप एग्जाम ले लो भाई। every point, every minute point is very important. Limits, sections, ये हमने पढ़ा होता बहुत अच्छा होता, but then revision is also mandatory guys. Revision is mandatory. ठीक है, तो ये था। और लेंगे ऐसे क्विजेस? बेटा रिवाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ लिस्ट, कहां पर पेड अप कैपिटल, कहां पर टर्नओवर है, कहां पर लोन है। वो हमने लिमिट्स की है आई थिंक, हाँ हमने की है, ऐप पे की हुई है लिमिट्स, आप वो देखिए। थैंक यू रघु, आई नो दैट, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। चलो वी मीट एट द ऐप नेक्स्ट 5-10 मिनट में। वहाँ पर अपना पीई का रिविजन चल रहा है, आई थिंक फर्स्ट स्केड्यूल हमारा चल रहा है, 4 क्लासेस हो गए, बाकी आज करने वाले हम लोग। टुमारो वी गोना डू मेंटी, 21 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि टुमारो मेंटी क्विज फुल सिलेबस। टुमारो बी लाइव, टाइम पर आ जाना भाई कल, जो लोग लेट। हाँ मेंटी बेटा यूट्यूब पर ही होता है, ऐप पे नहीं होता, मुझे नहीं आता ऐप पे लेने को, मेंटी पर ही होता है शायद। ऑल द बेस्ट, ठीक है। स्वाति ठीक है, ऐसे कुछ देखेंगे अभी सेशन बीच में ऐसा फिलर आइटम्स लेते रहेंगे अपन। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।